hello everyone. Poonam Academy presents MCQs का महासंग्राम क्लास 10th Economics Term 1 Chapter Development. Right? Let's get started. Question number 1. In India, life expectancy has dashed over a period. Life expectancy means जो average life होती है एक person की, that is life expectancy. So answer is A, increased हुई है. Right? Next question. Decrease in death rate is answer is D, demographic indicator. Right? Death rate decrease हो रही है, वो किसका indicator है? Demographic indicator है. Right? Next question. In which Indian state infant mortality rate is lowest? So answer is A, Kerala, because Kerala is having higher literacy rates. As you all know, so answer is A. Next question, what is the life expectancy at birth in India? So answer is C, 68 years जो है एक average life है एक person की इंडिया में. So आपको ये अच्छे से learn करना है. This is again an important question. Which state in India has the highest life expectancy? Again the answer is A, Kerala. तो केरला पे एक क्वेश्चन बनना चाहिए, आप अच्छे से learn करिए. Right? Again this is a very important question. Next question, life expectancy stands for expectancy of life at birth for a given population, average length of a survival. So answer is D, right? All of these. Expected age at death of a human population, answer is D. Life expectancy age in India presently is currently क्या है? So answer is C, between 60 to 65. Next question, which one of the following is not a component of Human Development Index? So answer is D, power rate. Right? Option A, per capita, life expectancy, literacy. हाँ, ये तीनों indicators है. ठीक है, SGI index में. Next question, the World Bank has classified the country into how many categories? So the World Bank has classified the countries into 3 categories. ठीक है, आपको ये लर्न करना है. वो तीनों क्राइटेरिया क्या है, वो कैटेगरीज क्या है, वो भी आपको लर्न करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सो आंसर इज डी, यूएनडीपी, एंड द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, ये आपको लर्न करना है. फुल फॉर्म भी आ सकती है और ऐसे भी पूछा जा सकता है. बिसाइड्स इनकम पीपल वांट फॉर डेवलपमेंट, सो आंसर इज डी. फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द above. Right? Next question, what is IMR? So IMR का मतलब क्या होता है? Full form क्या होता है? Infant mortality rate. So option A is correct. Now what is per capita income? So answer is A, national income divided by total population. We will get per capita income. यानी कि average income कितनी है एक person की. Right? That is per capita income. In which one of the following states literacy rate is highest? Again the answer is B, Kerala. Low infant mortality rate in Kerala is due to, answer is A, again literacy rate is highest in Kerala, so adequate provision of basic health and educational facilities. So answer is A. Right? UNDP measures the development of country on हेल्थ के लिए भी है. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय, आंसर डी इज करेक्ट. हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी लेवल, ऑल आर करेक्ट. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम dash of the country, so income of all the residents of the country. So answer is A. What is the factor on which the life depends? Material things भी चाहिए, non material things भी चाहिए. So answer is C, both of these जो है ये correct है. ठीक है. Industrialists may want more dams to get more. क्या चाहिए industrialists को? Electricity, जो कि आपकी बुक में given है. Right? आपको explanation link भी मिल जाएगा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में. What is the meaning of material goods? So answer is D, can be seen, can be touched, are tangible. So answer is D, all of these आएगा. Right? और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं. HDI rank of India among 189 countries of the world. So answer is C, according to HDI 2020. Besides seeking more income, people seek things like equal treatment, freedom, security, all of the above. So answer is D, all of the
अबव, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है। विच नेबरिंग कंट्री हैज हायर HDI देन इंडिया? सो आंसर इज बी, श्रीलंका इज द आंसर, राइट। सो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है। वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज? सो आंसर इज बी, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द कंट्रीज, राइट। Next question, groundwater is an example of dash resources. Groundwater is an example of renewable resources, क्योंकि groundwater क्या होता है, renew होता है, right? Next question, what was India's per capita income in 2017? So answer is D, $1820 per annum. ये आपको learn करना है, ये भी important है. Next question, which category does India comes under? So answer is B, that is low middle income countries में India आता है, right? Next question, why Kerala has a low infant mortality rate? So answer is A, because Kerala has adequate provision of basic health and educational facility. क्योंकि केरला में literacy rate क्या है, highest. If you like my content, then do subscribe my channel, do share this video with your friends and colleagues, and I wish you all the best for term 1. Thank you.